नूर सो गया क्या? हाँ यार अभी मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। 8 बज गए यार, 9 बजे पब्लिक्स बंद हो जाएगा, ग्रोसरीज नहीं ले पाएंगे, खाना क्या खाएंगे फिर? नहीं उठा नहीं जा रहा। $1. Okay. You get, you know, but I wouldn't get the onions because you can get like a whole bag of fresh ones for $2 over there. But the apples are a good price. You have to always come in set. Is it okay? Trash. But those are good. That's amazing. $1. You would be surprised. Oh my goodness. Here, you can have the brown one since you're brown, and I'll have the white one since I'm white. I mean, I'm not kids here. Look, it's Hanor. It's Hanor. No, it's you. The big bad wolf ready to eat a little Indian boy. Put it with me. No, do you want to try? Yeah, sure. अभी मतलब सूटकेस खोलने का टाइम नहीं मिला, अभी सीरियल खा रहा हूँ साथ साथ वीडियो बना रहा था। सो आज लिटरली आई एम सो टायर्ड दैट आई डिडंट इवन गेट अ चांस टू टेक माय स्टेप टू द रूम। पता नहीं कब मौका मिलेगा, बट एनीवेज अभी मैं फटाफट डिनर करता हूँ, देन आई एम गोना गो टू बेड एंड आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। 8 घंटे सोने के बाद भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ओके सो नाउ फाइनली लेट्स गेट बैक टू वर्क। तो सामान मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा था, बट एक्चुअल में जब मैंने रियलाइज किया इतना नहीं है जितना बाकी लोगों का। वाओ, ये है एंड मैं बेडशीट भी लाया था, पिलो कवर भी लाया था, बट दे हैव पिलोज एज वेल, दे हैव बेडशीट एज वेल। मुझे इतने फर्निश्ड घर की आदत नहीं थी। एंड जब मैं अपने ऑन कैंपस हाउसिंग में मूव हुआ था, देयर वाज लिटरली यू नो सिर्फ बेड था, ऊपर लाइट्स भी नहीं थी, फ़ैन भी नहीं था, यू हैड टू बाय योर ओन लाइट्स। मतलब ये टेबल लैम्प मैंने तब खरीदा था, और जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे मतलब फ्री में मिल गया था, फिर जो मुझे फ्री मिला था मैंने ऐसे ही किसी और स्टूडेंट को फ्री में दे दिया था। बट द पॉइंट इज़ कि मतलब कुछ भी नहीं था। एंड नाउ लिटरली आई हैव लाइक टॉयलेट पेपर रेडी था, लाइक यू नो लाइक बेड शीट, पिलोज एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट लाइक टीवी भी इंक्लूडेड है। मुझे यकीन नहीं होता है, इतनी खुशी डाइजेस्ट नहीं होती। ड्रॉर्स आ जाएंगे इन अलमीरा, बट आई एम रियली कंफ्यूज कि मुझे टेबल कहाँ रखना चाहिए, दैट साइड और दिस साइड, बिकॉज यू नो बाहर रखने का क्या फ़ायदा है कि बाहर रखूँगा इट विल बी रियली ओपन, कमरा इतना बड़ा नहीं है। बट अंदर रखने का ये फ़ायदा है कि अगर बाहर से बाई चांस कोई शोर आता है देन आई विल नॉट फील इट। तो इस कारण मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, देखता हूँ कहाँ रखना है, देन आई विल सेट अप माय मॉनिटर। एंड जब मैं ये मूव इन कर रहा था तो मुझे लगा कि अर्पित के ड्रॉर जैसा मैं ऊपर से पकड़ूंगा, इट विल बी पॉसिबल, बट दिस इज़ लाइक रियली चीप क्वालिटी। $10 का ये ड्रॉर सेट है। मैं होल्ड कर रहा था, लिटरली ये मेरे हाथ में रहा, ये पूरा ड्रॉर नीचे गिर गया। शुक्र है कुछ टूटा फूटा नहीं, बट बचाव हो गया। बट लिटरली इसके ऊपर मैंने मॉनिटर तक रख दिया था, मॉनिटर भी नीचे गिरा, ड्रॉर भी नीचे गिरा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। बट द लेसन आई लर्न इज कि अगर $5-10 का फ़र्क पड़ता है तो ऑलवेज बाय हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एंड आई जस्ट नोटिस कि हैंगर्स तक इतने ज़्यादा फ्री हैं, फ्रॉम दीज टू दीज, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। Okay, so yeah, we don't have to put. I guess that, you know, those 2 chairs. I could have put those 2 chairs above there in the garage. Yeah, that's also fine. How many more suitcases need to go in there? 2 or 3? 3. Oh well, they'll probably fit. I'm ready. Okay, so it's pretty heavy. I tried from the corner to move it all the way there, but it seems. Where do you want to put the bed? So I'm just want to move it to that side so that my table can fit in, and I want to move this Okay, side. where? Does this stay here or does this move? Stay here. Stay here. If we move, see, look, Oh my God, see oh how my that's moving? Yeah. So, and we need to take the mattresses off. Okay, let's pick it up from the bottom like this, but don't drag. People lift. Uh-oh. No. No. I see it came apart. It will not fall off when I'm sleeping, right?
I don't know. I hope not. I mean, the moon might fall out of the sky while we're sleeping. I can't say. But, okay, so pick it up. It's never fallen apart before when anybody's sleeping. But you know, if you move it around, it'll fall apart. No, I will not do that. That's why I want to take your No permission. sex on the bed. I'm kidding. It's a joke. That's why it fell apart. कहाँ पे? So now suitcase number 2, जिसका honestly कोई भी wheel नहीं है, गुजारा चल रहा है बस 4 सालों से. Now suitcase number 3. Oh, some coconut oil जो जम चुका है. कैसे? इतनी ठंड तो थी नहीं. That also inverted. Oh my god, शुक्र है लीक नहीं हुआ, but inverted coconut oil. This was used to some extent by my Japanese roommate too because he loved it so much. Anyway, जैसे हमने पैक किया था to maximize space, it is just the way like that. I'm thinking of hanging it somewhere. Now back to the monitor. Chair, ये भी बहुत बेकार है. Anyways, पहले से तो better है at least. Monitor on. Oh shit! Holy crap! Oh my god! If you remember, मैंने आपको बताया था कि monitor रास्ते में गिर गया था. So this is the sign. टूट चुका है काफ़ी हद तक. जिस तरीके से monitor गिरा था, अर्पित मुझे कह भी रहा था कि there are less chances कि बचा होगा. But मेरे में फिर भी उम्मीद थी कि बच गया होगा. But on. Oh my god. So finally done with some office work and now मुझे हो गया. It's been around 2 weeks that मैं गुजारा कर रहा हूँ with this broken monitor. Thank God it's just a corner. इसी कारण मैं 2 हफ्ते तक इसे आराम से use कर पाया. But as soon as I buy my health insurance, all the necessary stuff, then I'll finally be able to order a new monitor as well. But अभी के लिए most important thing is this package. So if you guys remember that 2 weeks ago when I returned my iPhone, मुझे FedEx से ये package मिला था. I picked this package up. So actually this package was supposed to come in my new house itself क्योंकि मेरे नए घर के लिए था. But what happened was कि this suddenly got or shipped early, deliver जल्दी हो गया. तो इस कारण मुझे reschedule करना पड़ा क्योंकि I was not in this house. So I asked FedEx, can I do a FedEx pickup? Then it happened on time. So I finally got it. तो देखते हैं इसमें क्या है. Actually I know, but finally. Wow, it's like a kit from Sony. Okay, so these are the locks. Oh, finally. So wow, so this says ki we know that you have gotten a free camera before, but one free camera is never enough, so that's why we wanted to give you another free camera because we can see that you are very kind that you gifted your free camera to your sister. So that's why here comes another free camera. Wow. Oh my god. अच्छा इसे unboxing का मौका मिला ही नहीं. Oh, so it's already open. So I had gotten an email कि मुझे opportunity मिलेगी to try this Sony ZV-1 camera. It's an amazing vlogging camera, but I'll be trying it right now. I'm super happy and super excited to use it. So let's see if the battery is charged. Let me check कि battery मिली भी है कि नहीं. Yeah. Oh, this battery is pretty small. It is much smaller. It is literally 1/5 of the size of my Sony 6600 camera. बहुत ज़्यादा ही पतली है. How to rotate it? Oh, it is rotatable. Tripod, which has all the buttons needed to use it. So ये रहा microphone, and not only you get an ability to attach an external microphone just like the one I have, and also you get a windshield, or you can call it jadu, ताकि wind noise ना आए. I'm going to take out the SD card from GoPro and then put it with the help of an adapter into this Sony ZV-1 camera. फिर जाके हमें पता चलेगा whether Sony ZV-1 is the best budget vlogging camera or not. Alexa,
turn off all the lights. Okay. Okay, now finally time to test the camera. Okay, so I think this is the right place to test. Super noisy, super windy, and the view is amazing. And the favorite feature of this camera is this has a button. कि अगर मैं button press करूँ, the background become defocus and then focus. Background focus, on, off. It is so cool. I think the dynamic range is pretty less here because like it automatically color corrects and makes sure कि मेरा face bright है as compared to the background. But honestly, it is insanely good camera. The only complaint I have is it is a little bit less wide as compared to my Sony Alpha A6600. जो मैं उसके साथ lens use करता हूँ. The lens that I use with my Sony camera is 10 to 18 mm, so it is super wide. So that's the only complaint, but it's not like a game changer. Now comparing the Sony ZV-1 with the iPhone 11's front camera side by side, I can clearly see that both have amazing picture quality, but the microphone should be better of Sony ZV-1. मुझे घर जाके पता चलेगा. ये सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है. पहले इंडक्शन सिस्टम था. Oops. So I have to quickly finish my lunch. उसके बाद मुझे जाना है Amazon store, that is at Georgia Tech. On the way to Amazon locker to return the smart bulbs that don't work. Unfortunately एक प्रॉब्लम हो गई है. मैं पैकेज रिटर्न नहीं कर पाया because currently it's what's the time? It's currently 9 PM. तो हुआ ये कि एक्चुअली मुझे 9 PM से पहले पहुंचना था. मैं पहुंच भी सकता था, बट आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन, तो उसके कारण मैं पहुंच नहीं पाया. इट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉल, मुझे रिचार्ज करना था किसी के फ़ोन में. बट एनीवेज कल ही सही. बट इसी बहाने आज नाइट व्यू में कैमरा टेस्ट हो गया. एंड ऑनेस्टली इवन इन लो लाइट द क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा इज़ माइंड ब्लोइंग. एलेक्सा टर्न ऑन ऑल द लाइट्स. Final conclusion about the camera. So मैं iPhone से तकरीबन 2 साल से vlog कर रहा हूँ. So I can pretty much say that in terms of audio, iPhone is definitely better. But overall package of Sony ZV-1 in terms of video quality, especially in night and in terms of slow motion, this Sony ZV-1 is definitely better than iPhone 11 or even iPhone 11 Pro. But if you want to upgrade from your iPhone to next level, then I will still recommend Sony Alpha series because you get the flexibility to change lens. You have the flexibility to make it wider. So that's why it could be worth it. But if your budget is around $700 or 50,000 rupees in India, then you can definitely get it because it is really portable, and at the cost of 50,000 rupees, the packages you're getting is just mind-blowing. So that's why I would definitely recommend it. And other than that, आपको याद होगा, I had interviewed Kevin who got 100% scholarship in NYU. So he has started a mentorship program. So do check it out. And if you want to get 100% scholarship at NYU as well, he can definitely help out at Abu Dhabi campus or anywhere, any NYU campus. So link will be in the description below also for the camera. So that's pretty much it. Thanks so much for watching, and I will see you guys in the next one. Goodbye.